गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ P2P लैंडिंग इन इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2024 में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे पेयर टू पेयर लैंडिंग के ऊपर, और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 35% गिर गया था। जो मेन पर्पस होता है P2P प्लेटफॉर्म्स का वो लैंडर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करना होता है, बिना खुद डायरेक्टली लोन में इन्वॉल्वमेंट हुए किए बिना। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक छोट फीस चार्ज करते हैं लैंडर और बोरोवर्स के बीच में, और बाकी जो है उनको बीच में आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है। तो P2P लैंडिंग एक मेथड है लैंडिंग का, जिसमें डायरेक्टली इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो है वो एक इंटरमीडियरी द्वारा कनेक्ट करवाया जाता है। जनरली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो लैंडर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करते हैं और सिक्योर या अनसिक्योर लोन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तरह से ये अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शन आ चुका है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपने। और इसमें होता क्या है, पहले एक बोरोवर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है P2P प्लेटफॉर्म पे, फिर प्लेटफॉर्म इवैल्यूएट करता है कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, उसके हिसाब से उसे लोन ऑफर्स दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू। बोरोवर रिव्यू करता है ऑप्शंस अपने, और उसके हिसाब से अपना जो भी उसको ऑफ़र चाहिए वो उसे सिलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद अपनी वही इंटरेस्ट पेमेंट्स या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे करना शुरू करता है जब तक लोन की मैच्योरिटी नहीं होती है। जो प्लेटफॉर्म है ये P2P प्लेटफॉर्म, ये उससे कुछ फ़ीस चार्ज कर लेता है बोरोवर से और लैंडर्स दोनों से ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। एडवांटेज क्या है, हायर रिटर्न्स मिल जाते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में इन्वेस्टर्स को। और ये जो फंडिंग ऑप्शन है ये बोरोवर्स के लिए, खासकर उनके लिए अच्छा है जिनको अदरवाइज ट्रेडिशनल बैंक लोन्स नहीं मिल सकते। P2P लोन्स जो हैं वो कम इंटरेस्ट रेट्स पर मिलते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, तो जो है वो बोरोवर को भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत है, बहुत ही हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है इसमें, क्योंकि लैंडर्स की क्रेडिबिलिटी कोई खास नहीं होती है। लैंडर्स ना ही इंश्योर होते हैं, ना ही प्रोटेक्ट होते हैं गवर्नमेंट गारंटीज़ द्वारा। और कुछ रीजन्स में तो बहुत हेविली इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है P2P लैंडिंग को। इंडिया में अभी तक इस पे कोई क्लियर रेगुलेशंस नहीं है। बोरोवर्स जो है उनको कुछ एडिशनल चार्जेस भी कई बार देने पड़ते हैं बियॉन्ड उनके जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, तो इससे जो है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ जाती है। ठीक है। 2016 में आरबीआई ने शुरू किया रेगुलेशंस के बारे में कंसल्ट करना P2P लैंडिंग पर। उसके लिए उन्होंने एक डिस्कशन पेपर भी जो है वो रिलीज़ किया कि क्या रेगुलेशन करनी चाहिए इसकी। और उन्होंने देखा कि जो है P2P लैंडिंग सेक्टर जो है उसका उस टाइम पर उतना इम्पैक्ट नहीं था फाइनेंशियल सिस्टम पर, तो उन्होंने जो है वो उसको जो है उतना जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो P2P प्लेटफॉर्म जो हैं वो फिर धीरे धीरे जो है वो बैंक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। उसकी वजह से आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ा और इन प्रैक्टिसेस को बैन करना पड़ा। ठीक है। तो आरबीआई की रेगुलेशन जो है वो जो टारगेटेड पॉपुलर फीचर्स है जैसे गारंटेड रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट टर्म्स, इजी विड्रॉल ऑप्शंस, इन सबको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने रेगुलेशंस निकाले। आरबीआई ने कहा कि फुल फी डिस्क्लोजर भी करना है आपने, और ये कुछ लैंडर्स और बोरोवर्स के बीच में क्लोज ग्रुप मैचिंग नहीं की जा सकती। ठीक है। तो अब आउटलुक जो है वो इसका इंडिया में अनक्लियर है, और कुछ एक मेजर प्लेटफॉर्म जो थे उनको रिसेंटली आरबीआई ने न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया। आरबीआई जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लायंस के लिए भी इंस्पेक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो सोच रहे हैं कि वो अपने लाइसेंसेस जो है वो गिव अप ही कर दें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये अब ये जो है P2P प्लेटफॉर्म जो है वो एक वायबल बिजनेस नहीं रहा है उनके लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 21st लाइफ स्टॉक सेंसस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ जो हैं उन्होंने 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो है वो कंडक्ट किया है न्यू दिल्ली में, लॉन्च किया है एक्चुअली। तो लाइफ स्टॉक सेंसस क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जिसमें कि डेटा कलेक्ट किया जाता है वेरियस लाइफ स्टॉक स्पीशीज़ पर। मोस्ट रिसेंट सेंसस जो है वो 2019 में कंडक्ट किया गया था। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि नंबर और टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स क्या हैं ओवर टाइम, हम करते रहते हैं जब हर 5 साल में एक बार। और हमारे को इस डेटा से जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प हो जाता है पॉलिसीज़ डेवलप करने में लाइफ स्टॉक हेल्थ, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट पर। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी जो है लाइफ स्टॉक काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के बारे में जानने से हम इफ़ेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर हम जो है फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये जनरेट करता है मिलियंस ऑफ पीपल में को, खासकर जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। ठीक है। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में लाने के लिए जो है डेटा फ्रॉम सेंसस यूज़ किया जा सकता है। बेटर प्राइसिंग और मार्केट एक्सेस मिल सकता है फार्मर्स को इस डेटा से। एनिमल जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च जो की जा रही है उसमें जो है सेंसस सपोर्ट करता है डेटा के थ्रू।
तो जो ये डेटा है लाइव स्टॉक सेंसस का हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है और सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पोल्ट्री और स्ट्रे एनिमल्स को इसको काउंट किया जाता है। जो उनकी डिटेल है स्पीशीज़, ब्रीड, एज, सेक्स और ओनरशिप पर, वो भी कलेक्ट की जाती है। अभी तक 1919 से लेकर अभी तक 20 टोटल सेंसस कंडक्ट किए जा चुके हैं और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 4.7% कंट्री के जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 30% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का जीबीए में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो जो 21st सेंसस है वो अब कंडक्ट किया जाएगा, जो उसको मोबाइल ऐप्स के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग सब जो है वो ऑनलाइन की जाएगी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ। 2019 का जो डेटा था उसमें 535.78 मिलियन जो हमें लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन हमने कैप्चर की थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें कि आईसीएआर के फिशरीज़ एक्सटेंशन नेटवर्क के जो है रोल को जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो आईसीएआर है क्या? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये एक एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट, गाइड और मैनेज करने के लिए रिसर्च और एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज़ हो, एनिमल साइंसेज हो। ठीक है, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं DF-26 मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो स्टॉक पाइल है DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। न्यू सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है ये कि लगभग 60 न्यू लॉन्चर्स जो है वो चाइना के प्रोडक्शन साइट पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये DF-26 मिसाइल है एक चाइनीज़ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो बोथ लैंड बेस्ड और मैरीटाइम टारगेट्स दोनों को स्ट्राइक कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर्स तक की है। ठीक है, जो DF-26 है वो मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आता है, मतलब जो लॉन्च व्हीकल है वो अकोमोडेट कर सकता है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। DF-26 मिसाइल जो है वो रिकग्नाइज्ड है फॉर इट्स एंटी शिप वेरिएंट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो युगांडा का एक कोर्ट है, उन्होंने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के कमांडर को 40 साल की जेल कर दी है वॉर क्राइम्स के ट्रायल में। तो लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी है क्या? एक युगांडा का रिबेल ग्रुप है जो करंटली ऑपरेट करता है DR कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान के एरियाज़ में। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में ताकि रिस्टोर किया जा सके ऑनर एथनिक एकोली पीपल का, और एक उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके वर्जन के हिसाब से जो है वो बिठाई जा सके। वन ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका का ये क्रूएलेस्ट और मोस्ट एंड्योरिंग आर्म्ड ग्रुप्स है। इसको डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट ग्रुप बाय US। ठीक है, और इसके जैसे ICC जो है उन्होंने कई जो है अरेस्ट वारंट्स भी निकाले हैं इनके लीडर्स के अगेंस्ट। तो ये ग्रुप जो है वो एलिफेंट के आइवरी, गोल्ड और डायमंड से जो है अपनी इनकम जनरेट करता है, और इसको कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफ सूडान ने भी 1994 से सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सांबर लेक। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 40 माइग्रेटरी बर्ड्स जो जिसमें कि 2 से 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो भी डेड पाए गए हैं सांबर लेक जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर सांबर लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, और ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागौर और जयपुर राजस्थान में। सराउंडेड है ये सभी साइड से अरावली हिल्स द्वारा। इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया 1990 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटरिंग एरिया है ये फ्लैमिंगोस का, और सांबर लेक लगभग 2,10,000 टन सॉल्ट ईच ईयर प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से राजस्थान जो है वो जो है वन ऑफ द टॉप 3 सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरल ट्रायंगल। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट निकाली गई है 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ द्वारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, जिसमें बताया गया है कि ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज़ कैसे कोरल ट्रायंगल को हार्म कर रही है। तो कोरल ट्रायंगल जो है उसको अमेजॉन ऑफ द सीज़ भी कहते हैं। एक ह्यूज मरीन एरिया है लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड्स, ये सारा एरिया आता है। लगभग 76% वर्ल्ड के कोरल स्पीशीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन फ्रॉम कोस्टल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रही है कोरल ब्लीचिंग, उसकी वजह से जो है हेल्थ और रेजिलियंस जो है इकोसिस्टम्स की वो नुकसान हो रही है इस एरिया में। तो कोरल्स क्या हैं?
कोरल्स परमानेंटली अटैच होते हैं, बेसिकली एनिमल्स हैं ये, परमानेंटली अटैच रहते हैं ये ओशन फ्लोर से, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं ये सिंगल सेल्ड एल्गी जिसको हम जूसेंथले कहते हैं उसके साथ। हर कोरल एनिमल जो है उसको हम पॉलिप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ये भी टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने बहुत ही कम 45.5 स्कोर किया है, 176 रैंक आया है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 के अंदर। तो ये नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है क्या? गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल जो है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी नेगेव इसराइल, उनका ये डेवलप किया गया है इंडेक्स है। डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, हर कंट्री का प्रोग्रेस ये जो है वो असेस करता है कि कैसे कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस किया जा रहा है। तो पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की जाती है लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, उनको ये मेजर करता है। तो ये फर्स्ट एवर एडिशन है इस इंडेक्स का जो कंट्रीज़ को रैंक कर रहा है, ठीक है। और इंडिया का इतना जो है रैंक क्यों कम आया है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट है, मल्टीपल थ्रेट्स हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को, जैसे कि हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो कि एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 200th एनिवर्सरी जो है कित्तूर विजयोत्सव की, उस पर पोस्टेज स्टैंप निकाली गई है जिसमें कि हिस्टोरिक कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्टेज कित्तूर फोर्ट प्रीमिसेस में लॉन्च किया गया है। तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो है वो बॉर्न हुई थी काकती, एक स्मॉल विलेज है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। वो क्वीन बनी कित्तूर की, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। और उनकी राजा मालसा राजा जो थे देसाई फैमिली के, उनसे मैरिज हुई। जो उनके एल्डेस्ट सन थे शिवलिंग रुद्र, वो जब थ्रोन पर आए तो उन्होंने जो है वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, शिवलिंगप्पा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस शिवलिंगप्पा का जो चाइल्ड था उसको सक्सेसर टू द थ्रोन मारने से इनकार कर दिया, वही आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंडर। तो उसमें जो है ब्रिटिश ने उनके ऊपर अटैक कर दिया कित्तूर के ऊपर 1824 में। पहली बैटल में तो ब्रिटिश फोर्सेस को बहुत बुरी तरह हराया उन्होंने, ठीक है। लेकिन बाद में ब्रिटिश आर्मी ने अगेन अटैक किया और कित्तूर फोर्ट को जो है कैप्चर किया। रानी चेन्नम्मा और उनकी फैमिली को भी इम्प्रिजन और जेल कर दिया गया। So now let us see all these topics in English. So the first topic is rise and fall of P2P lending in India. This topic is important for your economy section. So in August 2024, RBI had imposed strict rules on peer-to-peer lending platforms. As a result, the industry's asset under the management has plummeted by almost 35%. So the main purpose of P2P platforms is to connect lenders and borrowers without being directly involved in the loan themselves. So what is peer-to-peer lending? It's a method of lending money directly to individuals or businesses without financial institutions as an intermediary. So this P2P lending typically occurs through online platforms which connect lenders with borrowers. P2P loans can either be secured or unsecured. Most are unsecured personal loans, of course. And these P2P lending is valued as an alternative financing option due to its distinct characteristics. Okay, so how it works? So generally a borrower submits an application on this P2P platform. Then the platform evaluates the credit worthiness of this borrower. Upon approval, the borrower receives loan offers from several investors based on their rating and interest rate. The borrower then reviews those options and selects a suitable offer. The borrower makes the normal interest payments and principal amount payment at the loan maturity. The platform charges fees to both the borrowers and lenders for the services. What are the advantages here? For investors, it offers higher returns than traditional investments. For the borrowers, it is a funding option who, especially to those borrowers who may otherwise not qualify for traditional bank loans. Due to increased competition and lower fees, P2P loans often feature reduced interest rates as well. But there are disadvantages as well. Like P2P loans carry higher risk of default. Lenders are not insured or protected by the government guarantees. Some regions also restrict or heavily regulate the P2P lending as well. Borrowers might encounter additional charges beyond the loan's interest rate, which can potentially raise their cost of borrowing. So in 2016, RBI began considering regulations for P2P lending to address informal money lending practices.
With global growth in P2P lending and new platforms emerging in India, RBI released a discussion paper on whether regulation was needed. So this sector had limited impact then on the financial system. So the RBI did not outline the uh, detailed guidelines at that time. But of course, RBI issued guidelines in 2017 which outlined the activities for lenders, eligibility criteria, and mandated transparency on fees and pricing. So P2P platforms started behaving like banks later on. This led RBI to intervene, banning certain practices. It also RBI also targeted most popular features like the guaranteed returns based on investment terms, easy withdrawal options. RBI also required full fee disclosure and prohibited close group matching of lenders and borrowers. Still, the outlook for P2P lending in India remains unclear. A major P2P platform was recently halted for new customer registrations also. RBI has also been inspecting platforms for compliance, and if secondary market options remain restricted, volumes may decline significantly. Some large platforms are even considering relinquishing their licenses. Okay. So the next topic is 21st Livestock Census. This topic is important for your environment section. Union Minister for Fisheries has launched the 21st Livestock Census, which is a comprehensive survey conducted to collect data on various livestock species, including cattle, buffalo, sheep, goat, pig, and poultry. The most recent census was conducted in 2019. What are the benefits of this census? So, it provides essential data on the number and types of livestock, their distribution, and trends over time. Accurate data also aids the government in developing policies related to livestock health, breeding, and management. Livestock also contribute significantly to the agricultural economy. Understanding the livestock population also helps in effective resource management, including feed and water resources. By assessing the livestock numbers and health, the census can inform strategies to enhance food production, improve nutrition, and ensure food security for the population. The livestock sector also provides employment opportunities to millions, especially in rural areas. Data from the census can guide sustainable practices in livestock management, helping to minimize environmental impact and promote animal welfare. It also helps in market analysis and development, which leads to better pricing and market access for farmers. The census also supports research initiatives in animal genetics. Okay, so what is the 21st livestock census? So of course, this census is conducted every 5 years, and it counts all domesticated animals, poultry, and stray animals. It collects details on species, breed, age, sex, and ownership. Since 1919, this has been conducted, and 20 such censuses have been completed until now. So why is it important? Because livestock sector contributes about 4.7% of nation's GVA and 30% of the agriculture sector's GVA. Okay, so 21st census will be conducted using mobile apps for data collection, monitoring, and reporting, along with tracking collection locations via GPS. As per the 2019 census, a livestock population of 535.78 million was found. Okay. So the next topic is Indian Council of Agricultural Research. This topic is important for our governance section. Ministry of Fisheries has held a meeting to discuss the role of ICAR Fisheries Extension Network to strengthen technology transfers in fisheries. ICAR is an autonomous organization under Department of Agriculture Research. It was established in 1929 as a registered society. It is the apex body for coordinating, guiding, managing research and education in agriculture. The Union Agriculture Minister is the president of ICAR. So the next topic is DF-26 missile. This topic is important for your security section. So China's stockpile of DF-26 intermediate range ballistic missiles has grown substantially, with new satellite imagery capturing about 60 new launches at a prominent Beijing-based production site. So DF-26 missile is a Chinese intermediate range ballistic missile which has the capability to strike both land-based and maritime targets. So it is capable of reaching targets at an approximate range of 3,000 to 4,000 kilometers. The DF-26 comes with a modular design, meaning that the launch vehicle can accommodate two types of nuclear warheads and several types of conventional warheads. DF-26 missile is recognized for its anti-ship variant also. Okay.
So the next topic is Lord's Resistance Army. This topic is important for international relations. So a court in Uganda has sentenced Lord's Resistance Army commander to 40 years in prison after a landmark war crimes trial over his role in Group's two-decade reign of violence. So basically, Lord's Resistance Army is a Ugandan rebel group currently operating in the border region of DR Congo, Central African Republic, and South Sudan. It was established in 1988 with the claim of restoring the honor of the ethnic Akoli people. It is one of the Central Africa's cruelest and most enduring armed groups. It was designated as a terrorist group by US, and even arrest warrants have been issued by the ICC against the leader of this group and other top commanders. This group draws income from elephant ivory, gold, diamonds, and even received certain support from the government of Sudan since 1994. So the next topic is Sambar Lake. This topic is important for your environment section. Over 40 migratory birds belonging to 2 to 3 different species have been found dead at around Sambar Lake in Jaipur district recently. Sambar Lake is the largest saltwater lake in India. It is located in the districts of Nagaur and Jaipur in Rajasthan. It is surrounded on all sides by the Aravalli Hills. It was designated as a Ramsar site in 1990. So it is one of the most important wintering area for flamingos. And Sambar Lake produces about 210,000 tons of salt each year, placing Rajasthan among the top 3 salt producing states of India. Okay. So the next topic is Coral Triangle. This topic is important for your environment section. So a report has recently been released at the 16th Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity, which has highlighted alarming facts about the oil and gas activities in the Coral Triangle. Coral Triangle is often referred to as the Amazon of the seas, and it is a huge marine area spanning over 10 million square kilometers. It includes countries like Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Philippines, Timor-Leste, Solomon Islands. It is home to about 76% of the world's coral species and supports more than 120 million people who rely on these resources for their livelihoods. So, unsustainable fishing practices, coastal development, pollution, climate-induced coral bleaching are certain risks which affect the health and resilience of these ecosystems. What are corals? They are essential animals. They are essentially animals which are permanently attached to the ocean floor. They share a symbiotic relationship with single-celled algae called the zooxanthellae, and each individual coral animal is known as a polyp. Okay. So the next topic is Nature Conservation Index. This topic is again important for your environment section. So India has scored an abysmal score of 45.5 and has ranked 176th in the Global Nature Conservation Index of 2024, which has been developed by Goldman Sonnenfeld School of Sustainability and Climate Change and Ben Gurion University of Negev, that is in Israel. And it's a data-driven analysis assessing each country's progress in balancing conservation and development. It is aimed to help governments, researchers, and organizations to identify concerns and enhance conservation policies for long-term biodiversity protection. It is the first ever edition of this index, which ranks countries based on their efforts. So India's rank has been at the bottom because of inefficient land management and rising threats to its biodiversity. This assessment has also highlighted multiple threats to India's biodiversity, including habitat loss and fragmentation caused by agriculture, urbanization, and infrastructure development, with climate change posing as an additional risk. Okay. So the next topic is Kittur Rani Chennamma. This topic is important for your art and culture section. So on the 200th anniversary of Kittur Vijayotsav, a commemorative postage stamp was released at the historic Kittur Rani Chennamma stage of Kittur Fort premises. So Kittur Rani Chennamma was born in Kakati, that is a small village in today's Belagavi district of Karnataka. She became the queen of Kitturu, that is in Karnataka, when she married Raja Malasaraja of the Desai family. After the Malasaraja's death in 1816, his eldest son, Shivaling Rudra, became the king. And before his death, Shivaling Rudra adopted a child, Shivalingappa, and declared him as his successor. But the British East India Company refused to recognize Shivalingappa as his successor because of the doctrine of lapse policy, and therefore they attacked on Kittur in 1824. But they lost the first battle very badly. The British army later again attacked Kittur fort and captured it. Rani Chennamma and her family were imprisoned and jailed at the fort where she died in 1829. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.